Hey guys, what's up? Uh, I'm just trying to test, how this is the first podcast shooting. I'm shooting on my new camera, new lens, and hoping to get a better result and hoping to be much more presentable for all of you. Uh, how have you been? This is the podcast number 48. I'm late by a day. This is happening quite often now, but it is what it is. I'm striving and thriving to do better, and apologies for missing out on a day sometimes. And so sometimes, not sometimes, this has been happening quite often with me that I wake up with a very vivid dream, and I usually see my father, and it's been quite often now, and it's like I wake up only tired. And when I was a child, I used to wake up sometimes crying after seeing some sort of a bad dream about my parents, my father, and then my dad and my mom would be there sitting sipping chai in the drawing room outside, and you will I remember I would feel, oh, that was just a dream. It's so crazy, as we grow up and you realize that sometimes you're having a happy dream with one of your parent and you wake up and you realize that they are not there in the real life. So I'm realizing and I'm humbled by the unfolding of life. Even if you give me the greatest and the richest kingdom on the planet Earth, even if the whole world starts bowing to me, even if you give me everything that a man can desire, nothing will bring peace to me. Only thing that makes, I would say, sense, even though that is beyond our senses, is praying and bowing down and humbly surrendering to God, life, the Creator, Almighty, Universe, whatever you call it. There are 10,000 names to it, but let's just not get into the names. Let's just get into the feeling and the emotion that I'm trying to convey. So I know this will be the case with me forever now, that nothing brings lasting peace to me. Nothing brings, nothing gives any meaning if it's not aligned to the Creator and to the higher purpose, and if I'm not operating from the truth. Truth is love, truth is compassion, truth is courage, truth is thriving. All our organs are thriving every day. So then how can that not be the message of the existence? How can that not be the guidance of the existence? Why won't we follow that in our own lives? Why won't we fulfill our duties? Even though I suck at almost everything that I do and I try to do, but I humbly accept it and I'm trying my best to not be as bad at things as I've been in the past. And knowing that life is all about the process and the journey, it is never about the destination and the result, because there is no such thing as a destination or a result. Life is always a progression from nothing to nothing. If I make it more poetic, it is a progression from innocence to innocence. If you are anything, if you have become anything but innocent today, even if you are 60, 70 years old, then we need to know we have missed the point, or we are lost. How do we know that we are on the path? We'll start becoming more of the way we were before, when everything happened to us, or maybe when we went through all the experiences of life and when we were hardened by it.
Before that, we were little kids, we were innocent babies we loved playing, we loved eating food. We never shied away from expressing our emotions openly. We cried out loud. Instantly, we switched our tears and a teary face from a laughter if a friend cracked a joke. We never held on to anything. We kept moving on. Nothing was heavy for us, and even though when we look back, when we grow up and when we talk about our childhood and we realize that, oh my God, those were humbling times. How did I not how did I not notice it? How was I so content in my life for whatever I had in my life? That is insane. That is so inspiring for you to learn from your younger self. And this reminds me of one of the times, my mother. So as a kid, my dad was always very generous. If he would shop for us, he would shop like you can buy anything. And if he would take us out to eat, then it's like I can point at anything and I'll be eating that, and nobody will say no to me. And even if I liked something that my friend must have gotten, a thing or anything at all, and I told my father in the market that, oh papa, वो मेरे दोस्त के पास में भी वही है, मेरे को भी चाहिए. He would ask the shopkeeper or the store owner, what is the nicest thing in the store, in whatever in that section. The store owner might say something very expensive, and my dad would say, we'll buy that then. Do you want that? And I was like such a innocent child, because my friend had that, I wanted the same thing. It was a cheaper thing. So I told him कि नहीं पापा, मुझे यही चाहिए, मुझे महंगा वाला नहीं चाहिए. And my dad would laugh and he would just get me that. This reminds me even one time, long ago, of course long ago, I was crying for I was asking to my dad कि पापा मुझे video game लेनी है. And I told him couple of times, and one day finally that day came. He told me that on so and so day we'll go. So we were in Delhi that time. I was in class 4th or 5th, and he took me this place called Palika Bazaar. It's in Connaught Place, I think, in Delhi. He took me there, and the moment I became so happy and excited. The moment we entered the store, and my dad asked the guy which is the best video game, show us that one, which is the best for a child like him. And because I was pretty reckless, I used to break things within months. So I'm damn sure that time PlayStation had not come, or maybe he must have. I'm saying maybe it must have come, but I never heard of it. Nobody spoke about it, and I remember PlayStation 1 had come when I was in class 7th. PS, it used to be PlayStation only. That's it, PlayStation. So I'm damn sure in my 4th standard PlayStation was not there. The coolest thing and the in thing was Sega. So my father asked me, which one do you want? The guy said ki Sega, and my dad is like ye lena hai, ye le. And I'm like, nahi papa, mujhe ye nahi chahiye, mujhe wo chahiye. I bought the cheapest video game, man. And the logic was, because everybody had the cheaper video game. So my logic was, I can exchange. That time there used to be cartridges, cassettes. My reason was so that I can exchange cassettes with them and I can trade. Because if I would have gotten Sega, then nobody had Sega in the entire area. In the entire that part of the, maybe one or two kids might have in the entire part of that Delhi. It was so expensive that time. So then my dad was like, he was looking at me and he was confused what sort of a child he is. Then he bought the cheaper one for me. I remember I played couple of days, and then my friend, the one who had influenced me, he went and bought Sega. And then I asked him, bro, तूने क्यों ले ली Sega? भाई तेरे चक्कर में मैंने ये ले ली. उसने बोला कि bro, मैंने तो पापा को बहुत टाइम से कहा होता कि मुझे Sega चाहिए. And so दोनों भाइयों का birthday, they were two brothers,
आई थिंक इट वॉज वन ऑफ देम्स बर्थडे, एंड लास्ट वाले का बर्थडे गया था कुछ महीने पहले, तो उसके पापा ने दोनों भाइयों के बर्थडे का एक ही गिफ्ट दिया दोनों को, सेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे सेगा चाहिए था यार, अब मुझे सेगा चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट। But then I used to go to my friend's house and play Sega at his house. I remember we used to play Mortal Kombat a lot, and I was little kind of I was the youngest one in the lot. I was in class 4th. My best friend was in class 7th, and his older brother Karan was in class 8th, and we all used to play in his room. That I'm just getting the flashes of the memory. Can't explain those times, you know. We used to live in this place called Pushp Vihar in South Delhi. Lovely times. And so yeah, I'm just trying to tell you that how kids are, you know, and it says so many things about how kids are. You know, my dad, I do not know, you know, like when we are growing up, we only know how we feel, and we just say that we love our parents, but we never know that how they are looking at their children, that they can, because they have seen some life, they are grown-ups, so they have seen the hard times and everything. Of course I'm sure they know ki if a household has 3-4 kids, the parents know that this kid has this tendency, that kid has that tendency, this one is little courageous, that one is a softie. So they can see that and they also sometimes worry, because the world is pretty harsh and there's a harsh reality that awaits for everybody, reality of the society. So sometimes our parents start worrying for us that how will they navigate their ways in this brutal society. And when I was in class 10th, I think 8th 9th onwards, I had started overhearing my father discussing with my mother that how will he survive, like ये कैसे करेगा शमा, my mom's name is शमा ये कैसे करेगा, ये दोनों तो कुछ कर लेंगे लाइफ में, लेकिन ये कैसे करेगा. My father was so concerned about it and he would just cry sometimes, and मैं छुपके से सुन लेता था, and किचन में खड़े होके मुझे ऑनेस्टली बड़ा अजीब सी फीलिंग आती थी, बहुत मिक्स फीलिंग आती थी कि मैं क्या कह रहे हैं पापा, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, like what does that mean. Now I know what he meant by that. And when I started working and when I started thriving in society and I started being my own person in my college, after my college and everything, my dad looked a little relieved, but even then he knew that he would say that he would sometimes suggest and tell me that अगर बाकी लोग कुछ कहीं पर कोई प्रोडक्शन हाउस में कहीं कोई पॉलिटिक्स खेल रहा हो तो आप दूर रहना उनसे, आप कोई सच्चाई का साथ देते हुए किसी बात का कोई किसी से झगड़ा मत कर लेना अगर आपके ऊपर कोई बात नहीं है. ये तो ही वुड ट्राई टू गाइड मी समटाइम्स. ही मेंट टू से दैट समटाइम्स इट्स गुड टू लीव अ प्लेस rather than always trying to take the position of what is right and this should be done. Somebody is taking somebody's advantage, I'm going to fight on his behalf. So my dad used to tell me that not to do that. Just basically he would say just stay out of trouble, you know. And but the thing is I was always getting into trouble for other people mostly, and then afterwards for myself as well. And so my dad used to tell me, he used to give me a very some sort of he would give me some sort of a reference, like he'll say कि बेटा 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो समाज में चलता नहीं है, सोने में भी मिलावट करनी पड़ती है, 23 कैरेट का चलता है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 24 कैरेट, मेरे पापा कहते थे कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप 24 कैरेट के गोल्ड हो मेरी नज़रों में, थोड़ी सी मिलावट कभी एक बार चलती है, इट्स ओके. आपको 24 कैरेट का नहीं रहना है क्योंकि वो इतना प्योर होता है, वो चलता ही नहीं है दुनिया में. वो उससे इट कैन नॉट बी मोल्डेड, यू कैन नॉट मेक ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ इट. देयर हैज़ टू बी समथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन इट. मेरे को ये बात कभी समझ में नहीं आई भाई, कभी भी नहीं आई मुझे. इनफैक्ट ये बात लास्ट 2-3 साल पहले ही, 3-4 साल पहले ही समझ में आई प्रॉपर्ली कि वो कहना क्या चाहते थे. मेरे पापा बहुत आगे का सोचते थे यार. एंड
मेरे मन में एक अजीब सी चीज़ आ गई, कहते हुए मैं थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर सकता हूँ अभी, बट इतना नहीं कि मैं रो दूँ, बट डेफिनेटली मेरे मन में कुछ हो रहा है अभी ये कहते हुए जो मैं कहने वाला हूँ। अब मेरी लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी क्यों नहीं होता है, मेरे को सीधा मेरे पापा की बहुत तेज़ याद आती है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार, मेरे पापा को ये पता ही नहीं है मैंने ये कर रहा हूँ अभी। मैं पापा होते तो मेरे को बताता अभी, और पापा नहीं देख पाए, और मैं और बड़ा बड़ा होता जाऊँगा ऊपर वाले की दुआ से। अगर मैं उतना जीता हूँ कि मेरी मेरी अच्छी फैमिली होती है, मेरे खुद के बच्चे होते हैं, मैं और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में अचीव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ समाज में जिससे मेरे पापा को अच्छा लगता। जब भी मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा होगा ना, उसके अंदर एक ना टेंटेड सी एक दुख की फीलिंग रहेगी हमेशा। पता नहीं मैं कैसे इस बात को बयान करूँ। आप लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। मैंने रिसेंटली अपना हाईएस्ट वेट टच किया है। आई एम 80 kgs नाउ, एंड आई हैव गेन्ड सम 88 kg, सॉरी आई हैव गेन्ड सम 8 kgs ऑफ मसल मास। एंड ये बात मेरे पापा के बीच की बात है। और आज मैं जिस टाइप का लगता हूँ और दिखता हूँ, जैसा मैं हूँ, मेरे मन में बार बार एक दुख जैसी फीलिंग आती है कि मैं अपने पापा को ये दिखा नहीं पा सकता अभी। और मेरी हर बात, मैं कुछ भी करता ना, इमीडिएटली फ़ोटो खींच के मैं पापा को व्हाट्सएप करता था। चलो व्हाट्सएप तो अभी आया होगा, बट उससे पहले मेरे बचपन के दिनों में एक रूटीन था कि जिम से आके मैं टी शर्ट निकाल के पापा के सामने पोजिंग करता था। यानी उनसे कि वाह बेटा शाबाश, बेटा शाबाश। पापा यार, कभी बार मैं सोचता हूँ कि यार बहुत ही सेल्फिश सा डिज़ायर है कि वो और लंबा कोई इंसान, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ घट चुकी है, उसका आउटकम कुछ और मांगना हमारी चाह के हिसाब से। एंड आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी सेल्फिश डिमांड है आई थिंक। एंड मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ कभी भी किसी से या किसी भी चीज़ में, बट फिर सोचता हूँ कि शायद अगर अभी जवान हूँ तो पापा को जाते हुए देख पाया, इतना दम था अंदर इमोशनल चीज़ों को, और बहुत आगे कुछ करने के लिए है अभी। सोचता हूँ कि ये तो कभी ना कभी होना ही था, पापा या मुझे, हम दोनों में से एक को तो कभी ना कभी जाना ही था। तो ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है। ये मैंने पापा से सीखा है, उनके इस दूर जाने से, कि ज़िंदगी एक बहुत ही स्लो जेंटल एक्ट ऑफ लेट गो है। हर चीज़ को, हर किसी का एक रूप चेंज होगा जो कि सेम नहीं रहेगा। हमारे पास चीज़ें सेम तरीके से नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। किसी के बच्चे छोटे हैं जो बहुत प्यारे हैं घर पे, उन्हीं को याद करते हैं 24 घंटे, कल को वो अपने अपने काम पे बाहर निकल जाएंगे, उनको भूल जाएंगे। वो भी चीज़ होती है इस जीवन में, वो भी है। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने सीखा है कि ये बात सोचता हूँ कि चलो वो अभी गए हैं तो अभी मैं जवान हूँ, बहुत कुछ करने के लिए है, मैं बहुत कुछ ज़िंदगी के जवाब ढूंढ रहा हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मैं सोचता हूँ अगर यही चीज़ अगर फ्यूचर में भी घट जाती, शायद उस समय मेरे अंदर वो क्षमता नहीं होती झेलने की या लेने की, मैं टूट जाता अलग ही लेवल पे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फेयर है, हमारे अंदर फाउंटेन ऑफ एनर्जी होता है, वो उम्र दर उम्र उसका भी फ़्लो अप एंड डाउन होता है। आज जो यूथफुलनेस में मेरे अंदर जो फायर है, जो पैशन है, जो जुनून है, जो चीज़ें आगे बढ़ने का है, लेगेसी को आगे लेके जाने का है, वो आज 10-15 साल बाद शायद नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा, शायद कुछ और होगा। आज मेरी अप्रोच सेम नहीं है। कोई बंदा मुझसे झगड़ा करने आता है तो मैं सीधा उसको मारने नहीं आता हूँ, या फिर मैं झगड़ा की पहले नहीं करना चाहूँगा। मैं शांति का रास्ता चुनना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरा नेचर आज ऐसा है। मैंने इतनी ज़िंदगी थोड़ी सी देख ली है, मेरे अंदर पैशन अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। बट मैं बात जानता हूँ कि किसी को मार के, किसी से लड़ाई करके, वो सबसे बड़ा पैटी और सबसे ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ है, और कमज़ोर इंसान का पाथ है वो। हार्डेस्ट थिंग लेट गो करना है, हार्डेस्ट थिंग लोगों को माफ़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है। मैं हार्डेस्ट थिंग करना बिलीव करता हूँ, क्योंकि यूजुअली हार्ड थिंग और सही थिंग दोनों की दोनों सेम होती हैं। सॉरी, यूजुअली द थिंग दैट इज़ द हार्डेस्ट, द थिंग दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, यूजुअली दे आर द सेम थिंग। सो दैट्स वाई सही चीज़ करना में हमेशा ज़ोर पड़ता है, क्योंकि वो सही है। और आसान चीज़ें वो होती हैं जो कि गलत होती हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया वो करती है सुबह से उठ के रात तक। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ कि जिसने आखिरी सांस तक कठिनाई से भरा हुआ रास्ता चुना, विलिंगली, हैप्पीली, विद डीप ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। दैट्स अबाउट इट। मैंने बहुत लंबा बोल दिया यार। आई होप कैमरे ने डिसेंट रिकॉर्ड किया हुआ।
Bye, guys. See you.